Sports. This is the post-match show live after the first T20I between India and Sri Lanka, and what a humdinger it was. India finally kept their nerves and won the match by 2 wickets. But kudos to the Sri Lankans that they gave a really, really good fight. It was a close match. I'm joined by Joydeep Mukherjee. I'm joined by Debashish Sen. Joyda, I'll start with you. What a match it was. India winning by 2 runs. I mean, yes, it will show that Sri Lanka gave their fight, but credit to the Indian team, the way they held their nerves. Akshar Patel finally bowling the last over. It was a good, cracking match to start the series. Yeah, but I don't think India had a great game. I think India were way below par with the bat. I have no idea why Hardik Pandya didn't bowl that last over because he seems to be prancing around. He's running around, so he's okay. See, it's very, very tough. No matter who the spinner is, forget Akshar, anybody, to give the 20th over to the spinner, ask him to, defend those runs is not fair on any spinner in the world. Why don't spinners bowl in the slog then? Then they should be in the history of T20 cricket. There should be Narayan bowling 20th, Murli bowling 20th. They never happen because it's slower of the air. There's chances of miss it going. So I was really disappointed and a little bit surprised to see Hardik not bowl that, especially when he took responsibility. It was superb to see him in the first three. He opened with the new ball. He knew he had Umran Malik. He knew he had Harshal Patel doesn't bowl with the new ball, and Mavi, two guys who bowl with the new ball, but they're newcomers. So he said, I will start it off. And he was superb Yeah. at the top. But just on the batting front, I think India were 25, 30 runs short. See, here, it's one thing going hammer and tongs and play a new brand of cricket. It's quite another to have a plan B also, so that you get to Right. 175. If you're trying to get to 220, if that doesn't happen, it should not be 150. It should be there should be a 180 in the middle. So if Right. you Right. go, Yeah. Yeah. yeah, you go to play for 200, 210. If that doesn't happen, then you try, suss it at 175. Ultimately, but that didn't happen today. Kept losing wickets, kept playing shots, and Mhm. I think some of the players who are playing here should take this opportunity because there are some really big players who are missing who will come back. So people like Sanju and all need to cash in. Mhm. Absolutely, absolutely. You are spot on here. But on that point, why Hardik didn't bowl the final over, he had a niggle. We saw a phase where Surya Kumar Yadav was leading the side in the absence of Hardik Pandya. So maybe he was not completely fit, and that's why he gave the ball to Akshar Patel there. And I think I don't know the exact reason, but yes, that No, could be he had the, a He had the cramps. He he had had a cramps. cramp. He Yeah. had a yeah, cramp. Went out for 2 overs. He had his salt water. He came back, and then he was brilliant in the field. If he wasn't in the right, field, or if he was hobbling around, I can understand. But right, maybe he felt that his body would need time to warm up. When you have a cramp, right, he also did not want to bowl two balls and then pull up. That can happen right, right, when you right. bowl fast. There were, Fast, yeah. yeah, fast bowling has a different skill set to it. And suppose he's feeling a little tight in the hammy, and then he bowls two balls and he pulls up, and then he leaves somebody with four balls. That'd be unfair. Right. That could be the only Right. reason. But today Hardik was brilliant. He got out early. It's okay. But as a captain, as a bowler, the way he was spending time with the guys who are new, like a Mhm. Mavi or Umran Malik, just the mahol he had in the pitch. All of them young boys having fun. Really good to see. Oh, absolutely. He brought that Gujarat Titans flavor in this Indian lineup. But Debashish, I'll come to you. What a debut that was for Shivam Mavi. 4 overs, 22 runs, 4 wickets coming from UP, making his debut. Yes, we have seen him play for Kolkata Knight Riders in the past, but yes, what a debut for Shivam Mavi. Debashish, you first before I go to Amit. Yeah, absolutely. It was a fabulous debut for Shivam Mavi, and we would like to thank the Knight Riders for supporting him when he was down with injury. He was Right. not playing in that season. Then the Knight Riders backed him. They paid for his Mhm. expenses. So Joydipda can tell us better because Right, he was right, right. associated with KKR that time. So I think we must Mhm. thank KKR for sustaining with him during backing him up during his injury. And we all know the talent he brings in because with him and Kamarless Nagarkoti, these were the two Right. finds means with that 2018 T20 World Cup squad where Shubman Gill was also Shubman part Gill, of that Shubman side. Gill as well. So Yes, I think yes. that these two were raw talents. They were drafted in the IPL franchise. Then they had an injury. They missed out, and it's good to see Shivam Mavi back and cashing in the opportunity. The first opportunity that he got,
he cashed in, and it was a what a wonderful spell he bowled today. He bowled his heart out, and that was fabulous to see a youngster doing so well. Shubham. Yes, yes, absolutely. I'll straight away go to Amit Shah. He's joining us from Wankhede Stadium in Mumbai. Amit भाई कैसा माहौल है मुंबई में? बहुत जबरदस्त मैच हुआ है, 2 विकेट 2 रन से जीती है इंडिया, बहुत टाइट मैच हुआ है, लास्ट बॉल तक गया है। तो वहाँ का माहौल बताइए और मैच को आप कैसे समाप्त करते हैं वो भी बताइए। देखिए नेल बाइटिंग कहूंगा मैं शुभान, यहाँ से नेल बाइटिंग फिनिश हुआ। बिल्कुल। और अगर आप मेरे पीछे यहाँ पर देखें तो आपको दर्शक आते हुए दिख रहे हैं। अगर आप देखेंगे, हाँ, मैं मैदान के बाहर जरूर हूँ, लेकिन मैं कहूँ आखिरी बॉल तक लोग जो है वो अपनी सीट छोड़ नहीं रहे थे। और नए कप्तान ने जो अपनी जीत की जो दर्ज कराई ना, एक थ्रिलिंग जीत कहेंगे। और राइट। मैं बड़ा खुश हूँ कि जो आज की जीत के जो हीरो रहे ना, वो यंगस्टर शिवम मावी 4 विकेट लेकर के एक ड्रीम डेब्यू यहाँ पर हम कहेंगे। रियली एक बिल्कुल। ड्रीम डेब्यू यंगस्टर के लिए। मुंबई के ऐसे हिस्टोरिकल ग्राउंड जहाँ पर 2011 का वर्ल्ड कप जीता गया, ऐसे हिस्टोरिकल ग्राउंड पर 4 विकेट अपने पहले ही मैच में, पहले इंटरनेशनल T20 में लेना, ये रियली एक कप्तान का भी भरोसा आज उन्होंने जीता। पहले थोड़े शुरुआती ओवर में किफायती साबित नहीं हुए, लेकिन उसके बाद उन्होंने काफी अच्छी बॉलिंग करी। लेकिन क्रेडिट यहाँ पर मैं देना चाहूंगा दीपक हुड्डा और अक्षर पटेल की पार्टनरशिप को भी। आखिरी 5 ओवर में बिल्कुल। 61 रन उन्होंने बनाए। जिस जिस दीपक हुड्डा पर सवालिया निशान लगाए जा रहे थे कि दीपक हुड्डा किस तरीके से क्या हमें यूजफुल होंगे कि नहीं, आज उन्होंने बता दिया कि अगर सीनियर खिलाड़ी टीम में नहीं है ना, तो मिडिल ऑर्डर में आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। और हार्दिक पांड्या बतौर कप्तान कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा था कि मिडिल ऑर्डर में हमारे पास ऐसे भारी भरकम खिलाड़ी हैं जो टीम के लिए 5 रन बना सकते हैं। अक्षर पटेल जिन पर एक ऑलराउंडर का एक जो लेबल टीम इंडिया ने जो चिपकाया था, बहुत सटीक रूप से यहाँ पर उन्होंने करके दिया। और विकेट इतना आसान नहीं था शिशुभाई, मैं आपको बताऊं, हाँ, वानखेड़े सीजन में थोड़ा सा फंस रहा था नया वो। विकेट, नया सीजन का नया विकेट, थोड़ा फंसा हुआ बॉल आ रहा था। ऐसे में जिस तरीके से गेंदबाजी और बल्लेबाजी का मुजाहिरा टीम इंडिया ने किया है, बतौर आखिरी मोमेंट में मैच फंसा जरूर था, लेकिन निरंतर अंतराल से मैं कहूँगा आखिरी ओवर अक्षर पटेल ने जो आखिरी के 3 बॉल डाले ना, वो बेहतरीन डाले थे। तो मेरे हिसाब से एक कलेक्टिव टीम विक्ट्री यहाँ पर टीटी मीडिया की ओर से कही जाएगी इस बार। बिल्कुल, बिल्कुल अमित भाई, आपने बहुत अच्छे से सम अप किया है जितने भी पॉजिटिव्स थे। बट यहाँ पे थोड़े थोड़े बहुत नेगेटिव्स, थोड़े बहुत क्वेश्चन मार्क्स भी थे इस परफॉर्मेंसेस में। जैसे जॉयदीप दा ने बोला, इट वाज नॉट अ परफेक्ट आउटिंग, इट वाज अ स्क्रैची आउटिंग, आई कैन से। बट जॉयदीप दा, I mean, okay, we can't really question Surya Kumar Yadav, the kind of 2022 he had. But what about Sanju Samson? Of course, Deepak Huda and Akshar Patel with their late cameo saved the blushes for India and took them to 162, which was a competitive target. But at the same time, two players I would like to ask you about. Number one, Sanju Samson. He's getting a chance right now in the T20 team, and number two is Yuzvendra Chahal. Bowled only 2 overs, conceded 20 plus runs. I mean, how do you look at these two players? See, for me, we saw Surya bat at three today. So when you Yeah, bat at three, you're still going hammer and tongs. But when you right. lose three or four, when Surya is already in the hut, then you have to go to plan B. And that's where I thought that Hardik and everybody else could have just, because today Aksar and Aksar and Akshar and Buddha Deepak did Huda. Buddha did Huh, it, but it will not happen every day. And then right, the next batsman is Harshit Patel. So then your batting right. is thin from there on. So that's why Hmm, ideally you want one of your top three, four to stay at the end also, even if both don't stay. On a good day, both stay. But even on a day, plan B is when one of them stay. So if hmm, Hardik says we've lost 4 wickets, let us not try and bat at 150, let us bat at 130 because the pitch was a bit sticky. In the second half, hmm, with the dew falling, it actually became right. better because the Hmm, dew fell a little bit dry. It was two pace. We saw the towels out every ball. We saw Hardik blowing at the ball trying to get it dry, and that's the reason it was better for batting. Otherwise, that shot, hmm, that six in the last over, you cannot hit that unless the wicket is a decent one, because that was a right, good length ball which was hoiked over long on. So that's a good wicket right. shot. That shot probably wouldn't have been possible in the first half because the ball was True. slightly holding and coming. With the dew, it just firms up the ground a little better. But I just felt that, True. yeah, I just felt that we could have batted a little bit more sensibly in the middle because this time the last pair bailed us out. It won't happen every time. Number one,
Number two is for Sanju also, he has to realize he's not even get runs. It's the shot he got played out played. And it's sometimes you know it's the shot that makes you look worse than you are. I'm a big fan of Right. his, but if he goes for the right shot, then you get out, you're forgiven. Like Surya's, this is Surya's shot. Out of 10 times, 8 times he gets it. This is the 2 times that he didn't get it, so he's forgiven. But the Right. shot that Sanju Samson played, he plays in the IPL from long on to cover. He's not a deep mid wicket play against the spin. He tried that in India. So he's also under pressure. He also knows this is not IPL. He doesn't have 14 games. He's not the skipper. He's trying to make his. So he's doing things which he doesn't do for IPL. I would just Right. hope that he does what got him to where he is. Oh, absolutely. I think that's a very fair point. But अमित भाई मैं दो प्लेयर्स के बारे में आपसे पूछता हूँ. हालांकि पूरा टीम परफॉर्मेंस अच्छा था, मतलब कॉम्पैक्ट अगर आप जीतते हैं तो अच्छा परफॉर्मेंस हम दिन के एंड में बोलते हैं. बट अगर हम पेस बॉलिंग की बात करें, शिवम मावी के डेब्यू के बारे में आपने बात की. बट वही पे साथ साथ उमरान मलिक का जो परफॉर्मेंस था, 4 ओवर में 27 रन 2 विकेट. अब जब वो धीरे धीरे इंटरनेशनल मैचेस खेल रहे हैं, डोमेस्टिक में भी अब धीरे धीरे खेल रहे हैं, जम्मू के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए ज्यादा मैचेस खेल रहे हैं. थोड़े से अब लग रहे हैं कि पॉलिश अप हो रहे हैं धीरे धीरे और इंटरनेशनल स्टेज के लिए रेडी हो रहे हैं. जब उन्होंने आयरलैंड के अगेंस्ट डेब्यू किया था बहुत रो लग रहे थे. तो उनके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए शुभायन, मौके आपको देने पड़ेंगे. अगर आपका प्लेयर, अगर आपको रेगुलर इंटरवल में आपको प्लेयर्स तैयार करने हैं, तो आपको उनको ज्यादा से ज्यादा मैच खिलाने पड़ेंगे, तो ही वो प्लेयर सीखेंगे. अगर वो प्लेयर को आप एक मैच दो मैच देते हो, उनके रिप्लेसमेंट में दूसरे प्लेयर ले आते हो, तो ऐसे प्लेयर तैयार नहीं होंगे. आई थिंक जॉयदा मेरी बात से सहमत करेंगे. महेंद्र सिंह धोनी आप देखिए, अगर जो भी बॉलर को रन ज्यादा पड़ते थे, लेकिन उन पर वो भरोसा जताते थे, उनको कॉन्फिडेंस देते थे. अगर आप उमरान मलिक को अपना एक फ्यूचर का रेगुलर बॉलर देखते हैं, तो आपको उनको मौके देने पड़ेंगे. रन आते जाते हैं, T20 का मुकाबला है, 30 गेंदबाज को रन पड़ेंगे, क्योंकि हर एक गेंदबाज जो है, सॉरी, हर एक जो बल्लेबाज है, वो 30 गेंदबाजों को आसानी से मारना चाहिए. भारतीय विकेट है, यहाँ पर मौसम थोड़ा ठंडा है, इसमें बॉल थोड़ी सी फंसकर आ रही थी. शायद उमरान मलिक का पेस है, उसको आसानी से बल्लेबाज जो है वो खेल भी सकते थे. लेकिन अर्शदीप आज टीम में नहीं थे. अगर अर्शदीप टीम में हाँ. होते, तो क्या उमरान मलिक को मौका मिलता? शिवम मावी का टीम में खेलना लगभग लगभग तय था, क्योंकि जिस तरीके से कल अच्छा. वो नेट्स में गेंदबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि शायद उनको कैप मिल ही जाएगी. लेकिन अगर अर्शदीप आते हैं, तो क्या उमरान मलिक को टीम रखेगी टीम में? या क्या हर्षल पटेल की भी गेंदबाजी ठीक रही, इतनी खराब उन्होंने नहीं की. हर्षल पटेल एक्सपीरियंस है. तो जो आपने उमरान मलिक की बात करी, मुझे लगता है कि अगर हार्दिक पांड्या बतौर कप्तान उनको स्कीम ऑफ थिंग्स में देखते हैं, तो मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या और टीम मैनेजमेंट को उनको कई मैचेस देने होंगे. कि आने वाले दिनों में न्यूजीलैंड भी आ रही है, ऑस्ट्रेलिया भी आ रही है, उनके सामने वनडे है. तो आपको यहाँ पर उमरान मलिक को कुछ मैचेस देने होंगे, तो इस गेंदबाजों की उपयोगिता है जो आपको समझ में आएगी. I think Umran एब्सोल्युटली. Malik would यस play, जॉयदा. yeah, Umran Malik would have played this game anyway. It was Mavi who played instead of Arshdeep. That was told to us by the management. And ओके. they're different bowlers. Harshal doesn't bowl with the new ball; he bowls in the middle. They're different sort of new the bowlers. So you have to choose one for the other. And you got to remember over here that Sri Lanka doesn't play 145, 150 that well. Umran Malik's as good as he was today. His real test will be England, Australia, South Africa, who play 145, 150 every day in the nets. Oh, true, absolutely true. But Joyda, honestly, how do you assess Harshal Patel? I mean, he was almost a regular in the Indian playing 11 before the T20 World Cup. But then when the T20 World Cup came, he was in the bench. He warmed the bench for the entirety of the tournament. Now again, he's back in the playing 11 and he conceded 40-41 runs in his 4 over quota. How do you assess it? Because he bowls the tough overs, as we say, Yeah. during the middle overs and death overs. Yeah, it's going to take some time for him to come back to rhythm and confidence also in the Indian team. I said, Mama has traveled Yeah, a lot with the Indian team. So yeah. as I mean, no matter what you have done, when you've had a break and others have done reasonably well, when you come back, you feel the pressure, no matter who you are. So he will also have to be given a little longer run to be at his best. Because when you make a comeback, you always it's almost like your second innings, your 2.0. And there everything is what you've done before is kind of nullified for the time that has passed. So no matter how much you bowl in the nets in practice matches, in Mushtaq Ali or wherever, once you go and play an international, it feels different and he will have Right. we need a little bit of time. But he also has his utility in certain pitches, in certain grounds, and he's somebody who will be in the picture.
because there will be wickets Right. which will hold up a bit. And also, who are the people who will bowl in the middle? That is also you got to see. We've got all bowlers who bowl up front with the new ball, whether it's these guys, whether it's Mm. Bumrah, whether everybody bowls front and back. Who's going to bowl in the middle and Right. take wicket? If Chahal is not, then Harshal is your guy. Because Chahal obviously didn't, again, he's played Ranji Trophy, didn't have a great Ranji Trophy, but I'm so glad these boys are playing. Umran Malik, I think, was Mm. as good as he was today because he played the Ranji games. After all, it's a ball he Deepak is Huda bowling. scored 3 centuries in 2 matches, and he Yeah. looked in great touch. That is the reason why it's so good to see and great initiative by the BCCI to tell the domestic players, whoever is not playing, to come and play domestic cricket. Chahal hasn't played red ball cricket for 3 or 4 years, but he played the last Yeah. 2 games. Maybe it wasn't his evening today, but it will be in 2 days' time. It well could be. Mm. Very true. Very true. Yes. Yes, Amit bhai. जोधा से एक मेरा सवाल है यहाँ पर, जो जोधा देखिए, हमारी इतनी अच्छी बैटिंग लाइनअप अगर हम देख सकते हैं, लेकिन अगर आप पिछले कुछ मुकाबले देखें, अगर वर्ल्ड कप के सारे मुकाबले और आज का भी मुकाबला देखें, हमारी टीम जो है वो 160 165 पर ही आके रुक जाती है। तो थैंक्स टू आज अक्षर पटेल और दीपक हुड्डा, जो उन्होंने 5 ओवर में 61 रन बनाए 30 गेंदों में, तब हम 160 तक पहुंचे। तो ये जो आंकड़ा है, जो T20 में काफी छोटा माना जाता है, हम 180 200 रन का टारगेट एटलीस्ट चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ पर यहाँ पर टीम इंडिया जो है वो चूक करिए, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में बड़ा स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं देखिए मैं ये टॉप गन आंसर के करूंगा राहुल। मैं ये जी जी। आंसर करूंगा लेकिन मामा के बाद। मामा, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? Yeah, I see. India has hit only 8 sixes in their total in their innings. Mhm. If you Mhm. consider a team like England, Hmm. you need to have a role clarity. Let me be very frank. Means you need to, means that there has been a lot of talks about role clarity, Hmm. and it's been going on for ages now. Hmm. Means what is your vision? What is your role clarity? Means as far as T20 cricket is concerned, एग्जैक्टली look at एग्जैक्टली। England. You have an example of England. 8 sixes in T20 innings doesn't win you matches consistently. Hmm. Means Not even eight. if you Devashish, it's seven. seven sixes, Yeah. seven sixes in 20 overs. So Hmm. and that too, Deepak And Huda and had he and a not, ground like Wankhede. and that too had Deepak Huda had not hit those 3 sixes towards the end, Yeah. India only 4 sixes or 5 sixes in the total innings. So Mm. um, obviously Surya did not click. Hardik did not Mhm. click. So means considering that, and that too means, so if you go hammer on tongue, then you need to have that role clarity. Means obviously, so and the importance herein lies the middle overs. Means that is where we Mm. have been Right. lacking in our approach. Obviously, our top मेरा order. Yes, yes, Amit. मेरा यही एक कहना है कि आप कब तक एक जीत के साथ में खुश हो जाओगे। ठीक है, 160 हुआ, हम जीत गए, आखिरी बॉल तक मैच में हम जीत गए, लेकिन जैसे देवाशीष ने कहा कि आपका रोड प्लान क्या है। जैसे कप्तान आते हैं, Right. कोई भी खिलाड़ी आता है, कहते हैं कि हमारा रोड मैप ये है, हम ये प्लानिंग से चल रहे हैं। ऐसे एक जीत से या एक हार से आप खुश नहीं हो पाओगे। अगर आपको वर्ल्ड चैंपियन बनना है तो आपको एक रोड मैप बनाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से हम सारे वर्ल्ड कप में थे, देवाशीष थे, हम थे, बुनियादा थे। हमने देखा आज भी हमें वही चीज मिली, 160 पर आके हमारी टीम टिक जाती है 165 पे। अगर आपको इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी टीमें अगर घर में आके हमारे यहाँ आएगी, 200 250 का टारगेट देगी, तब आप कहाँ जाओगे? तो आपके प्लान कहाँ Right. जाएंगे? मेरे हिसाब से आज की भले इंडिया जीती है, लेकिन इस प्लानिंग से मैं तो सेटिस्फाई नहीं हूँ, अगर आप मुझे कहें तो। That is why, Ambitji, I started the show by saying India got out of jail. I told Shubhayan and Mama that Mm. Absolutely. he joined. Yeah. This is not a win. That they'll not be happy with their performance. They'll be happy that they won the game. That is the only Right. happiness. But I'm sure Rahul will talk to the boys, and they themselves they are mature players. इनको सब पता है कि Mm. हमने 20-25 रन कम डाला, हमने कहाँ गलती किया. Sanju lying in bed tonight will think about his shot. Ishan Kishan lying in bed will think if he could have batted a little bit deeper, not put that shot in the back burner for a while. Hardik would have thought of that shot. So everybody would have thought, even Surya would. Surya, I don't blame him because that's Surya's shot. And if Surya tries to hit a brilliant cover drive and gets out, I can say. But the way Hardik started, one of these guys have to bat till the end. If wickets keep falling, one of them have to blow a little, come down a couple of gears. You cannot, because Right. ultimately there are only 6 batters, and then today we अपना गाड़ी रिजर्व में चलता है ना, आज रिजर्व में हम निकल गए, पर रिजर्व में तो हर दिन निकलेगा नहीं। Right. Right. But एक ऑनेस्ट सवाल सबके लिए है, जब
जब आपके दसुन शानका वनिंदु हसरंगा और लास्ट में चमिका करुणारत्ने बैट कर रहे थे, पहले मैं अमित जी से सवाल पूछूंगा, वहां पे प्रेस बॉक्स में क्या बातें चल रही थी कि गया मैच? ऑनेस्ट आंसर चाहिए मेरे को। 3 इंट्रो, सारे जर्नलिस्टों ने 3 इंट्रो बना के रखे थे कि ये यूज करें, ये यूज करें, ये यूज करें, क्योंकि मैच ऐसा था। और देखिए, जब 19th ओवर डाला अक्षर ने, उसके बाद आखिरी ओवर कौन डाले? अक्षर पटेल को दिया। एक छक्का पड़ने के बाद सब परेशानी में, जब क्या डाले, ईशान किशन पीछे से आ गए थे, हार्दिक पांड्या, तीनों चर्चा कर रहे थे कि यहाँ डालना है, वहां डालना है। एक बॉल अक्षर ने एकदम आउटसाइड ऑप्शन डाल दी थी। बैट्समैन समझ रहे कि तो वाइड बॉल होगी, लेकिन वो वाइड नहीं हुई। और उसके बाद जिस बिल्कुल। तरीके से रन आउट हुआ और आखिरी बॉल में जो रन आया, कहीं ना कहीं राहत की सांस ली। लेकिन मैं ये हम्म, कहूंगा कि आप इतने स्कोरबोर्ड पर रन बना के रखिए कि सामने वाली हम्म, टीम जो है उसको आप ऐसा टारगेट दीजिए तो आपके गेंदबाजों को भी एक आसानी होगी कि वो जो है वो आपको अच्छे से रन चेस करे। 160 रन आज के डेट में, देखिए श्रीलंकन टीम, हमारे मुकाबले श्रीलंकन टीम उतने एक्सपीरियंस नहीं है, भले वो खिलाड़ी कह रहे हैं, लेकिन आप भारत की धरती पे खेल रहे हो, आपकी इतनी अच्छी टीम है, आपके खिलाड़ी यही आईपीएल के मेजर मैचेस खेलते हैं, उनको हर एक विकेट का अंदाजा है। और ऐसे विकेटों पर भी आप 165 रन बनाएंगे तो मेरे हिसाब से नहीं। आप इस टीम में नंबर 1 से नंबर 7 तक के प्लेयर देखें। आप तो वॉशिंगटन सुंदर की बल्लेबाजी नहीं आई थी, वो भी लंबा शॉट्स मारना जानते हैं। आपके बल्लेबाजों की गलती, वानखेड़े स्टेडियम दूसरे ग्राउंड्स के मुकाबले थोड़ा छोटा भी जरूर है, यहाँ पर सिक्स मारना काफी आसान है। और आईपीएल में हमने हम्म, देखा है, और जैसे दिवाशीष ने बात की, हमने केवल 7 सिक्स मारे। तो मेरे हिसाब से सेटिस्फेक्शन यहाँ नहीं होता है। तो ये जो जर्नलिस्टों के हम्म, अंदर भी यही चर्चा हो रही थी कि अगर ये जो है, इसलिए मैंने बात का टॉपिक निकाला कि रोड मैप और रोड प्लान की जो बातें कर रहे हैं, यहाँ पर यहाँ पर अंत नहीं होता उसका। और ये आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सामने आपको खेलना है। आपका मनोबल और कम हो सकता है अगर ये टीमें श्रृंखला आपके होम सीरीज में अगर आके जीत के गई तो आपको एक ऐसी रणनीति के साथ, ठोस रणनीति के साथ आना होगा, और उस पर इम्प्लीमेंट जो है वो बहुत जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है 50 ओवर्स का, ज्यादा इनिंग आपके पास नहीं बचे। अमित जी, ये विकेट ना पहले जब इंडिया बैटिंग किया, छक्का मारने का विकेट था नहीं। ये हम छक्का मारने की इसीलिए आउट हुआ, संजू सैमसन छक्का मारने आउट हुआ, ईशान किशन हम्म, छक्का मारने आउट हुआ, सूर्या, बिकॉज थोड़ा बॉल पकड़ के आ रहा था, तो मुझे लग रहा था चौका के ऊपर और डिपेंड करे और सिंगल डबल पे डिपेंड करे, तो उसमें क्या होता है, 7-8 रन आता रहेगा। 7-8 रन ही तो हुआ एंड में, 160 ही तो हुआ, इतने ही 200 हम्म, हुआ। लेकिन अगर ये लोग थोड़ा रिस्क फ्री एयर में बॉल ना मार के खेले, तो एंड में जब आएगा, जैसे असली 18-19-20 आएगा, तब हार्दिक पांड्या रहेगा, संजू सैमसन रहेगा, वो बाहर मारने वाला, तो उसमें ज्यादा चांस है उनको बाहर मारने उस टाइम पे। लेकिन 12, 13, 14 में अगर विकेट आप लो दोगे, तो 16, 17, 18, 19 में आपका 8 नंबर 7 नंबर बैटिंग करेगा। आप चाहते हो आपका हम्म। 5 नंबर 6 नंबर 17, 18 ओवर बैटिंग करे। Devashish, of course, I mean, will Sri Lanka rue their chance of not winning the match? We should take this question. Yes, there's a question. Hardik is not a Hardik is there's not a a. comment Come that on, come on. Guri Avinash has written that Hardik Pandya is not a captaincy material It's I a after bit what think too we harsh. saw. After what. I It's a think bit I too think harsh. Shubha and Amit and I can keep quiet for the next 2 minutes. Mama, all yours. I think. Yeah, it's too harsh. Too harsh. How can you call No, him? I want to It's ask not a why. captaincy. He has won I you the want to just IPL ask match. why. Uh, IPL. No, I we understand. should take him in. We should take him in our show next time and No, ask him Mama, why. everybody can has have their view. We just want to know why he Right. feels that. Is it Right. because he captains Gujarat for the first time and he The won? sheer fact, Jojit, if you can take today's match, the sheer fact that he's opened the bowling for India, that's the biggest positive. The Yes. Knowing captain showing, knowing knowing that Arshdeep is injured, not playing or yeah, not well, yes, and my yes. two opening new bowlers are Umran Malik and Mavi making debut. Shivam Mavi, who is making his So, debut. Mm, so in the first over, Sri Lanka could have gone after Mavi or Umar Malik and taken 16, 18, and that would have pegged them back straight away. right. But he took the responsibility. Not only bowled one, and in the third over, he was huffing and puffing. Mm. इतना उनने दम से डाला 3 ओवर. Absolutely. He was bowling तो 138, 139, 140. Yes, yes. yeah, and also because it's power play, he knows point square leg सब अंदर है, इसीलिए दम से डाला. एंड बहुत दिन Mm, बाद दम से अगर 18 बॉल डालोगे ना, तो आपको लगेगा सांस उतरी है. लेकिन उसने दम से mm. डाला, उनको पता था कि ये 3 ओवर में अगर 12-14 रन दूंगा तो ये मैच बन गया. And और and वही and हुआ. to that आई gentleman who थिंक has raised the सुपर. question,
And to I that love him gentleman as a who has raised captain. the Good question, Avinash, yes. I, Aditya, to that yeah. gentleman who has raised the question, I would like to say that Hardik Pandya has won him the series against New Zealand, and it's only his Hmm. first match. So let's not jump the gun and be too harsh on him. Right, No, we want. I would Give love him to the know time to if he settle can. down. No, if he can also tell us his reasons, one, two, three, four, right, that'd be nice. See, right. everybody, Mama has their point of view, but Absolutely, it's good to hear them absolutely. out. So he's won the IPL with Gujarat. He's come here every time. What I also like is the mahol that he has in the ground. Hmm. Everybody loves him. Everybody's hugging. He's laughing. He's having fun. See, I have played professional cricket, and when you play cricket for a living, it's a tough job. It puts food Hmm. on the plate. It Absolutely. is how your life will be, your family life will be. If there is a guy who's having fun and making sure the other 10 are also having fun, Yeah. then that's the sort of guy you want. Because some of the Right, captains, because of their reputation, take it too seriously because of who they are. But Hardik right, seems to be a guy. This version also is a fun-loving version. If you are serious in this right, version, you will not do well. It's a freedom version. right, Okay, so that is why I love to right. see, and I have a feeling if he plays three versions, he's a future three version captain for India. I don't know if he'll play three version because he's got issues with his Test body. match is still a gray Yeah, area I'm for not him, sure. right? His body is Huh. an issue and all that. But if he does, I love the way he conducts himself. I love the way he talks to the boys. I love the way he went, even when it's a simple catch to to Sanju Samson, who had a poor day on the field. He goes to him, hugged Akshay Patel at the end. I Yes. have a feeling that these boys are ready to take a bullet for the captain, and that's the captain you want. Absolutely. Since And last I think August, Amit bhai, since last Budi, August, please. I just want to add into this. Since last August, if you see Hardik Pandya's performance, कोई भी फॉर्मेट में हम कहीं भी खेल रहे हो, यूएई में खेलें, चाहे ऑस्ट्रेलिया में खेलें, न्यूजीलैंड में खेलें, जैसे देवाशीष ने कहा, हार्दिक के परफॉर्मेंस में कहीं हमें कमी देखने नहीं मिली। लीडरशिप बिल्कुल, क्वालिटी भी उनकी बहुत अच्छी है। इंटरनेशनल में बिल्कुल। बीइंग एक फुल टाइम कैप्टन आपको टी20 का बना दिया गया है। भाई साहब एक ही मैच हुआ है, उन्हें मौका दीजिए और आज उन्होंने जिताया है, ठीक है। मैच हम जो आखिरी मोमेंट पे आके जीते, लेकिन उनके कप्तानी में कोई भी कसर नहीं रही है। यहाँ पर कप्तानी बहुत उन्होंने अच्छी की और आज बैटिंग में भी उन्होंने काफी अच्छी प्रदर्शन किया। नीचे आए, थोड़े बहुत रन बनाए और टीम को जो साथ में रखे, जैसे जॉर्जिप और दिवाशीष ने कहा कि जिस तरीके से खिलाड़ियों को मिडिल में एक पॉजिटिव माहौल रखना, जब आप रन ज्यादा खर्च करते हो, ऐसे में किस तरीके से आपका मोराल बूस्ट करना, किस तरीके से आपको Sanju रनिंग Samson, Sanju Samson missed a sitter in the first over. Sitter. हाँ, Right. that's हाँ, Absolutely. गैलरी मैं अभी गैलरी मैं गैलरी के चक्कर में मैं मिस द नहीं Ah, मिस द नहीं गैलरी exactly. नहीं, मुझे लगा उसको लगा दूर गिरेगा, लेकिन अपने स्पीड से पहुंच गए। कभी हम लोग कभी हुआ है कि पहले लगा नहीं पहुंच पाऊंगा, डाइव देना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली पहुंच गया आराम से। बट एक नॉट अ वर्ड फ्रॉम हार्दिक, नॉट इवन लुक एट हिम। राइट He was राइट disappointed, he was angry, he just kept to himself, took the ball, rubbed it and bowled. He blew it off. Yes, Mama. The only time I saw Hardik a bit agitated was when Yuzvendra Chahal misfielded during the last 2 overs. There was थोड़ा one गर्मा misfield. गर्मी Yes, मैच Debashita. Yeah, मैच टाइट हो गया। I would like to हाँ, take you a little back. During the IPL initial matches, he was a bit frustrated with Mohammad Shami, if Shami. I'm not wrong, Yeah. with Shami. Yes, But yes. that's the only Third man time I Shami. saw Third man Shami. Hardik lose his cool. But ever Hmm. since then, he's been a transformed cricketer. He's a Mama, matured he's captain. human. He's Yeah, human. हाँ. It will happen to absolutely. him. Even But Rohit Sharma loses his Even Rohit lost Sharma, what, MS lose his Dhoni, cool. even MS Dhoni has Yes, lost his even cool. what MS Dhoni also. I have So seen, it is about what percent, how many times in the last Hmm. 40 games we are saying twice. That's a great percentage to Hmm. have. Right, Great percentage to have. right, right. And I One think he final enjoys question before we. life. He's a free flowing character. He enjoys Yeah. life. He's a fun loving guy. That's the sort of guy you want. You don't want an I uptight think. guy where you are scared to express yourself, Right, because version is about right, expressing yourself. You right. cannot drive this And car I with the think handbrake on, not T20. Joy Joyda, I think Hardik understands his individual game a lot better now that he's the captain. He has captained Gujarat Titans. He understands his game and the players around him a lot better. He has his understanding of No, the game he's a much better. cricket skill wise, he's a fantastic cricketer. One Oh, front foot no cover doubt about drive, that. back foot cover drive. He hit in the first, as soon as he came in. Those shots, I can pay my admission just to see those two shots being played. The first front foot Absolutely. cover drive
and the next ball back foot cover drive. Those two Right. shots. So he's a fantastic cricketer. Fantastic. I just hope his body holds up because he's had Right. issues with his body, you know. Right. And every time he's a fit, strong boy. He's huffing and puffing Mhm. after 3 overs. How much effort is put into the 18 ball? What for? For India. He could have easily Right. thrown it to Umran Malik and said, "आप करो, आपको इसके लिए किया है, Hmm. नहीं, खुद पे लिया Right. है, और बच्चे को प्रोटेक्ट किया है." These are the guys, sort Absolutely. of captains. बाकी टीम वो बुलेट ले लेंगे उनके लिए कि भाई ये हमारे लिए ये करता है, मैं इनके लिए जान दे दूंगा. Right. Right. So good to देखिए see. कल Right. So Absolutely. देखिए कल 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 जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हार्दिक ने साफ रूप से कहा कि मेरे एक सेट जो हार्ड वर्किंग का एक प्रोसेस है उसको मैं फॉलो करे जा रहा हूँ. तो अगर आप देखिए कि वो हार्ड वर्क कितना काम में आ रहा है, उनका थोड़ा पेस भी अगर हम देखें गेंदबाजी में बड़ा है, विदाउट इंजरी उनको खुद जाना खासा ना हो, लेकिन लगातार वो खेल भी रहे हैं और काफी एक रिदम में आकर के खेल रहे हैं. तो इसके पीछे की जो उनकी मेहनत है, जिस तरीके से उन्होंने पिछले 6-8 महीने में अपने पर जो मेहनत करी है, मेरे हिसाब से काबिल तारीफ है. और अगर आपका सुपीरियर बोर्ड बीसीसीआई आपके चयनकर्ता सिलेक्टर्स उन्होंने जो उन पर जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी है तो ही जिम्मेदारी सौंपी है, और जिस तरीके से वो Right. यंग खिलाड़ियों को लेकर के चलते हैं ना, मेरे हिसाब से वो एक बहुत बेहतरीन क्वालिटी है शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द गेम. Right. Right. अब मैं फाइनल सवाल पूछूंगा बिफोर रैपिंग अप द शो. प्लेयर ऑफ द मैच कौन होगा आप सबके लिए? मैं 3 ऑप्शन देता हूँ, अक्षर पटेल, दीपक हुडा और शिवम मावी. तीनों हो में गया से एक दीपक नाम. हुड्डा, हो गया अब दीपक तो हुड्डा. वो तो मैं ऑफिशियल आपको हो गया, बताऊं, बट मैं आपका पूछता हूँ. I आप would बताइए आपके लिए कौन होगा ये जो. दादा I would give it to Deepak Huda and Shivam Mavi because दोनों के बिना मैच नहीं जीतते. राइट. राइट. 100%. देवाशीष दा. Deepak Huda for me because those दीपक हुडा. 45, those 41 runs were like gold. Means India wouldn't have ended up scoring 160 had he True. not scored that 41 runs 12 because they were down and out. Means what Mhm. was the score? If I'm not wrong, they were some 5 wickets down. Half of the They were wickets 5 gone. wickets down. Yeah. Not even 100 runs on the board. So you needed Right. that runs on the board to make a match Yeah, of it. I completely agree with that. But also, once you've got runs on the board, if Mavi didn't get those wickets, even 160 would have Absolutely. been. Mhm. Agreed. So Agreed. It's a that's the very Agreed. reason tricky why. call. It's a Agreed. very Agreed. tricky call. Agreed. No, both. I thought Absolutely. both. Even Akshar Patel bowled the final over, which was very tough for a spinner at No, market. Yeah. Akshar also, but Akshar will. So I would give probably, if I had to give on 100, I'd give 100 to a 99 to Akshar. But because these two are relatively younger players and playing, Akshar is more of a seasoned campaigner. But whereas Mm. Huda and Mavi are new players. So that's the reason I would Right. give it to them. One guy took care of the batting, one guy took care of the bowling equally. So for me, Right. it would be both. It would be both. अमित भाई आपने तो बोल ही दिया दीपक हुडा ऑफिशियली, आप उनके साथ ही जाओगे? तो मैंने ऑफिशियली बोला लेकिन मैं भी एग्री करता अभी हूँ. तो अमित जी रेडी हो रहे हैं नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या क्वेश्चन करना है हार्दिक पांड्या को. हाँ. वो उसी के लिए रेडी. क्योंकि अपना हार्दिक नोटबुक कल आ में गए, लिख रहे हैं. एकदम हार्दिक आ गए. मेरे हिसाब से बीसीसीआई शायद आज न्यू कमर शिवम मावी को शिवम मावी भेजेगी, को भेजो. या तो दीपक हुड्डा को भी भेज सकती है. लेकिन मेरे हिसाब से एफर्ट दोनों का है, जैसे आप दोनों ने कहा, एफर्ट दोनों का है. और कलेक्टिव जैसे आपके ऐसे परफॉर्मेंस होते हैं, आपको मैन ऑफ द मैच से उतना खुशी नहीं मिलती जितना आप आज, अगर शिवम मावी को नहीं भी दिया गया ना, आज वो बॉल अपने पास रखेंगे क्योंकि नए बॉल से 4 विकेट लिए. अच्छा मेरे हिसाब से अमित जी बताइए, देवाशीष have something. अर्शदीप फिट हो गया तो कौन ड्रॉप होगा? That is where I was Oh. about to say कि we just hope and wish कि our Shivam Mavi is not dropped from the next match because नहीं, youngster Harshal- perform किया, means you don't want, because Kuldeep Yadav, we know what happened recently, very recent times. Kuldeep Yadav 8 wickets in the match, he got stopped the next test. So means you need to encourage the youngsters. मैं आपको बताऊं वेदर थोड़ा वहां पर ज्यादा, सॉरी पुणे में है सॉरी मैच. सॉरी पुणे में मैच है और जयदीप दा चाहते हैं थोड़ा ठंडा हवा आता है, क्योंकि नवी मुंबई में अभी पिछले महीने ही जयदीप दा थे वहां पर. मुंबई में अगर हवा चल रही है, मुंबई में ठंडी हमको लग रही है, थोड़ी सर्दी, तो पुणे में वेदर जो है वो हिली एरिया में स्टेडियम है, वहां पर थोड़ा ठंडा होगा. अगर अर्शदीप फिट होते हैं तो उनको खिलाया जाएगा, और मेरे हिसाब से उमरान मलिक को नहीं खिलाएंगे क्योंकि शिवम मावी भी जो है वो हल्की सी गेंद स्विंग कर लेते हैं. तो मेरे हिसाब से हर्षल पटेल
शिवम मावी और अर्शदीप, ये देखिए तेज गेंदबाजी हम चार कितना लकी है कि हमको ये डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा. एंड इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव. इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव. देन किसको खिलाएं? जी। वेरी वैसे ही राहुल द्रविड़ के चेहरे पे टेंशन होती है, और टेंशन हो जाएगी इस जीत के बाद. जोक्स अपार्ट, बट बिल्कुल बिल्कुल. एंड ऑफ द डे अमित जी उस चेयर में जो बैठेगा ना, मैं स्टेट का बैठा हूँ. कोच का कांटों का जैसा ताज है दादा, कांटों का कोच का ताज है वो. कोच का जैसा किसी का प्रेशर नहीं होता है. कोच का ना हाथ में बल्ला है ना बॉल है, और बड़े प्लेयर रह चुके हैं और कुछ नहीं कर टोटली. सकते. राम ऊपर वाले के भरोसे में है. जितना हार्ड वर्क करो ऊपर वाले के भरोसे में है. इसीलिए कोच का प्रेशर खाली कोच ही. सिलेक्टर बोलो, कोई भी बोलो, कोच का प्रेशर कोच ही समझता है. ट्रू, वेरी ट्रू. I I think that's a good note to end the show. We'll be back again on Thursday when the second T20I moves to Pune. And thank you, gentlemen, for joining. Devashish Sen, Joydeep Mukherjee, and Amit Shah from Mumbai. It was a great show, fun chat. And India, yes, took a 1-0 lead in this three-match series. We'll be back again on Thursday for the post-match show of the India versus Sri Lanka series. Thank you for watching Thank you. Let's Sports, and don't forget to download the app from Google Play Store. That is where you will get all the stories. Yes, Jyotka. Absolutely. Thank you, Shubai, for hosting us. Good night, gentlemen. Thank you. Good Thank night. you. Good Thank you. night.